Televisiekijkers, goedenavond. Uw aandacht voor enkele korte berichten. We gaan beginnen met een ingekomen klacht. Dat is van een mevrouw van VCB. En kijken wat zij te vertellen heeft. Even kijken waar de klacht is van VCB. Bang. Ja, hier heb ik hem. Ik sta al hier een hele poosje in de rij Wat is hier? bij VCB Bank. Ja. En er wordt wel mensen geholpen Ja. die niet in de rij staan. En toen ik heb gesproken waarom die dame niet de rij heeft gevolgd en ze mag binnengaan, dan mag ik niet meer naar in de bank binnengaan. Ik mag mijn stortingen niet doen, ik mag niet zeggen of mijn salaris gestort is niet. En waarom mag je dat niet doen? Omdat ik mijn mondwerk heb gegeven. Omdat ik gevraagd heb waarom die dame naar binnen is gegaan zonder rij te volgen. En wie heeft dat bepaald dat u niet meer binnen mag? De security hier. De security? Ja, de security die buiten staat heeft boodschap gegeven dat ik niet binnen mag komen. Dat je niet binnen mag komen. Ja. Oké, goed. Blijf daar. Ik neem het even op met de directeur van de bank. Aboom. Goed, dit was dan een klacht gekomen afkomstig van een cliënt van de VCB. Ik heb mijn tijd genomen, heb ik gebeld naar een filiaalhouder, Basro Pansing. En Basro Pansing vertelde me, Monas, 3 jaar ik ba midanga pensioen. Ik geniet van mijn pensioen. Dus dan heb ik dan meneer Karaya gebeld, die de situatie daar waarneemt. En Karaya heeft het helder en duidelijk gezegd, goed gezegd hoor. Karaya tegen me is het klopt dat bepaalde mensen de rij volgen en bepaalde mensen rij niet volgen. Dat je ask me, pa, zij die gelden moeten lichten en storten, zij die een kassa nodig hebben, dan dat moest volgen rij. Maar koutak was mawanga pand oso en no antra klant no degi pand oso, dan gaat die geen rij volgen. Koutak was mawang met een directielid en dan volgt die geen rij. Koutak was maar zet een tori voor een lening en er zijn andere dat de man dat niet volgt aan rij. Dus als u gebruik wil maken van de kassa, geld lichten, geld storten, dan volgt aan rij. Maar als u naar de directie moet, hem gaat tekenen een stuk, hem leveren een plakzegel, dan dit eigenlijk direct. Karaya legt duidelijk uit, de cliënt staat centraal. Dan heeft u dat begrepen. Vandaag ook vanochtend werd ik gebeld door een paar marktmensen. Takwa heer jugu de dape, mensen willen standaard breken en misref no sap sang psat dape. Nou ben ik op locatie gegaan. Even kijken of ik, ja. Dus kortom gaat het dat de marktmensen daar ontevreden zijn over de situatie. Dat de mensen daar hun afstand moeten doen van verkoop van de markt zelf. Dus dat betekent je sertide tamara in een serie of je sertide, noem maar op, een soort roulatiesysteem. Daar standen moeten worden afgebroken en noem maar op. Ik ga proberen te kijken of ik ja, ik kan de marktmeester niet bereiken. Ik heb ook de DC gesproken. De DC zit bij stembureau. Ik kan haar ook niet interviewen. En dan misschien een woyoman dape ook toe. En soort woyoman misschien dape. Dat nou why do? Why do? Voor man sabi. Why do? Ouro woyoman dape. Dus laat ik even kijken of ik die woyoman why do kan spreken of niet. If tik op dan moet tak nangamang en mi hoop tak why do tik op. Want why do de alles say actief bezig. Dus ko luko of niet. Meneer William why do? Monas Nazar Ali. Mide pa i aksi pardon ook to. Hersena na i aksi pardon i karmineng to yung ibigi. Ha?
you make me come biggie dat me altijd moest membre you toch para. Okay, why do? You na woyo mang furumano sabi na dape igrokong. Yes. Goed, tide mate me, si wan get together na nga de woyo mang wahari wan trusu sep sa dape en soort oplossing hi abgidesma. Meneer Monas, ik was vanmorgen gebeld door Ja. mijn moeder, door mijn mensen die op straat zijn van meneer Waido en Wil, kijk, er zijn mensen hier voor het commissariaat. Kan je alsjeblieft langskomen, want die mensen vragen naar je, want ze willen die mensen stoppen om te verkopen bij de markt. Ja. Dus meer van dat is dat nee, en winsten het coronavirus, hij treft om een maatregel, maar niet verkopen is geen optie. Dus we race qua een Daisy en ik heb een heel goed gesprek gehad met Daisy en haar team. Ja. Zoals velen misschien niet weten, deze Daisy met haar team werken dag en nacht voor die kering. En zoals ik het ook zou weten, ben ik geïnformeerd. En het is niet zo zoals de marktcenters hebben aangegeven dat ze gesloten dan wel verboden wordt om te verkopen. Het is namelijk zo dat na zoveel keren er waarschuwingen door de autoriteiten bepaalde marktverkopers die man niet de regels in acht. Hoe allemaal sabitak serang na wafting enige kondre in een regio na zo weinig besmetting. Dat komt alleen omdat de autoriteiten een topjob doen. Dus de marktcenters die hoe sabitak is de man niet volgt de maatregelen en de regels dat we maatregelen gaan treffen. Het is niet de bedoeling, en dat zegt de DC ook, het is niet de bedoeling dat door enkele gedragingen van enkele marktcenters we heel die kleding in gevaar zullen brengen. Dus zegt ze aan die mensen dat Lukuno, die is naar de regels, hoe hoor op risking, wanneer bepaalde marktcenters, de man morsu, de mij zeer om en van drape, alla taiwaka, alla si, brandweerslif, en amfaptevanis. En daarom je want doen een beroep via uw medium, dan de marktcenters van MBK schuldig, kom de regels na. Ja. Omdat deze is een moeder, deze districtsmoeder die zie, als mij vetti geheer nikeri, maar als massa ben verantwoord ook toe, dat kan ik one to man sang no one arki, kara heer district in gevaar. Dus nogmaals meneer Monas, een oplossing D, een oplossing altijd D. Omdat deze is een team, dat kan de man ook toe de vertegenwoordigers, voor de marktverkopers, naar een marktmeester, dat we lossen van die op, maar ze moeten wel de regels in acht nemen. Dus dat naar heer Sani Brada. Maar ik mooi verhaal, kima oplossing. Alle van die tegen oplossing nadat de man precies op instructies op 2 meter afstand minimaal. De man moest horen afstand. Want de afgelopen periode bepaalde mannen gewoon pet de mij zeer de Sani afanopo. Sabi toch? De man moest op hand sanitizers na alles, alle de man moest op hand sanitizers. Dus deze zelf zegt van ze wil, als het aan haar ligt, wil ze dat heel terrein daar aan een mensen. Maar die mensen moeten ook een medewerking verlenen. Wij weten ook dat zonder geld zitten een groot probleem is. En daarom ook Kleuralwet goed naar het parlement. Dat financieel dat al deze mensen moet worden bijgestaan. Zangen nog op inkomen. Dat is maar sabi toe. Oké, wij doen duidelijke taal. En isa meka tang to sa mga yu adesa ifena ranger praxermi ook to erapa. Meneer Monas, je haar niet maken een grap viel. Dan moet je loop je meneer Monas altijd oprecht, altijd oplossingsgericht. Ja. Ik van je staat die van je en ooit met tegen die tak en wij doen ook zijn een oplossing voor de marktcenters. Ja. Dus je voorstel dat is niet aan idee. Dus brada, samen kunnen we dit land verheffen brada. Thank you. Succes. Samen zijn we sterk. City, bye bye. Dat was dan een interview met William Waidu. Mijn mensen, mijn taak is het volgende. Als zaken zich ergens afspelen, i bel me, i app me, of i make one video, i make one foto, i app me, en we zitten. Goedenavond. वुहान, तेहरान, मिलान, पूरी दुनिया है परेशान। जी हां, आज आप मिलेंगे उससे जिसने सबको किया है हैरान।
नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन जाने कब तक। मैं हूं रॉबर्ट अली शुक्ला और आज मैं आपको मिलवा रहा हूं उस इंसान से, माफ कीजिएगा, उस वायरस यानी विषाणु से जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दयालु इतने कि बिना एग्जाम के हजारों बच्चों को पास करा दिया। शक्तिशाली इतने कि गायिका को खलनायिका, मुकेश को अनिल और अनिल को नील बना दिया। जी हां, हम आज आपको मिलवा रहे हैं द वन एंड ओनली कोरोना भैया से। कोरोना जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आज कितनों को निपटा दिया? ए लौंडे, स्वागत वागत छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम रॉबर्ट अली शुक्ला किसने रखा है बे? ये भी कोई नाम होता है? जी दरअसल मैंने सोचा कि पता नहीं आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन क्या पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा नाम रख लिया। अबे हम कौनो इंसान हैं जो हिंदू, मुस्लिम और गोरा काला में भेद करें? हम विषाणु हैं, विषाणु। हमरे लिए सब बराबर हैं। कोरोना भैया, हमारे दर्शकों को अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। हमारा जन्म चाइना के वुहान में हुआ था। होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था। एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ताना बाना था। वहां से हम किसी तरह बाहर निकले और वहां की गलियों में घूमते घामते बड़े हो गए। जी बहुत अच्छा, लेकिन फिर आप बाकी दुनिया में कैसे पहुंचे? हुआ यूं कि वुहान में हम एक बार झियांग के मुंह से सुने कि लाइफ में अगर इटली नहीं घूमा तो कुछो नहीं किया। बस फिर क्या था, पहली फ्लाइट पकड़ ली और पहुंच गए इटली। ओ कसम से बहुत मजा आया और फिर तो हमें घूमने की लत ही लग गई। अब दुनिया का ऐसा कौनो देश नहीं है जहां हम ना गए हों। पर कोरोना भैया, बिहार में आपका एक भी केस सामने नहीं आ रहा। ए शुक्ला, याद मत दिलाओ उन सालों की। हमरे कई लोग वहां मारे गए। 4 कोरोना दिल्ली से दरभंगा एक्सप्रेस पकड़ के बिहार पहुंचे थे। साला जैसे ही ट्रेन से उतरे किसी ने उन पर लाल जहर थूक दिया। भैया वो गुटखा था, गुटखा। हाँ वही। उसमें हमारे 2 लोग मारे गए। उसके बाद एक कोरोना किसी तरह एक आदमी के हथेली पे चढ़ा तो वो पता नहीं साला कौन सा पाउडर लेकर हथेली पे रगड़ दिया। भैया उसको सुरती कहते हैं, सुरती। हाँ वही। छींकते छींकते मर गया बेचारा। लेकिन एक जो और था आखिरी वाला, उसका क्या हुआ? वो अपना काम कर रहा है, जल्दी ये पता चल जाएगा तुम लोगों को। अच्छा कोरोना भैया, एक बात पूछें, बुरा मत मानिएगा प्लीज। पूछो शुक्ला, पूछो, बेझिझक पूछो। आप किसी इंसान के अंदर कबड्डी खेल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? बहुत मुश्किल है। हम बहुत चालू चीज है भैया। हमरे लक्षण यू पिद्दी फ्लुएंजा जैसे होते हैं। बुखार, खांसी, सांस लेवे में दिक्कत, इसके अलावा थकान, दर्द, बहती नाक, गले में खराश, ये सब हमरे लक्षण हैं। कोरोना भैया, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आज तक आपको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसे में हम मनुष्य आपको खुश रखना चाहते हैं ताकि आप नाराज ना हो। हमको बुड़बक समझ रहे हो? फुसला के जानना चाहते हो कि हमसे बचा कैसे जाए? चलो तुम भी क्या याद रखोगे। देखो, हमसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है समाज से कट जाओ, चुपचाप घर में दुबक के रहो, और अगर जाना भी पड़े तो अपने साथ सैनिटाइजर या हैंड वॉश लेकर निकलो और थोड़ी थोड़ी देर में अपना हथवा साफ करते रहो। भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो भैया भूल के भी मत जाना। अगर बाय द वे जाना भी पड़े तो मुंह पे मास्क लगाकर जाना कि कौनो सरवा छींके तो उसके साथ हमारे भाई बंधु भी तुम्हारे अंदर न प्रवेश कर जाएं। कोरोना भैया, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? ए शुक्ला, ज्यादा ना कूदो। कैमरे पे नहीं होते ना तो अभी तुम्हारी बस भैया माफ कर दीजिए, अब ऐसा कोई सवाल आपसे नहीं पूछेंगे।
हाँ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जी 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 जी। चलिए माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और आपसे रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जिसमें आपको जल्दी जल्दी हमारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, दागो अपने क्वेश्चन। फेवरेट मूवी करोना प्यार है। फेवरेट रिंगटोन फेवरेट हीरोइन करोना कपूर। फेवरेट डायरेक्टर गे या सीधा कोई भी चलेगा, करोना जौहर। फेवरेट सॉन्ग जीना इहां कोरोना इहां, इसके सिवा जाना कहां। लेकिन भैया गाने में तो मरना यहां था। अरे बूढ़बक, कोरोना और मरना एक के बात है। जी 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 समझ गया। अब कुछ और बात करते हैं। अच्छा कोरोना भैया, हमारे दर्शक जानना चाहते थे कि क्या आपको भगवान से डर नहीं लगता? भगवान? अरे हम कौनो भगवान से कम हैं का? ऊ अगर विष्णु हैं तो हम भी विषाणु हैं। लेकिन भैया जी, विष्णु तो सबके पालनहार हैं और आप तो यहां संहार किए जा रहे हैं। तुम सेल्फिश मनुष्य हमरे न्याय को का समझोगे? तुम लोग पृथ्वी को नरक बना दिए थे, हर तरफ प्रदूषण। तुम लोगों के कारण समंदर नाला बन रहा था, हवा जहरीली हो रही थी, कितने जीव जंतु तुम्हारे कारण विलुप्त हो गए। कुछ आइडिया है तुमको? अगर हम ना होते तो तुम लोग इस पृथ्वी को डस्टबिन बना दिए होते। हमारी वजह से आज वेनिस की नहरों में डॉल्फिन घूम रही हैं। हमारी वजह से आज हवा में ताजगी लौटी है। जिन जगहों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, आज वहां खाली परिंदा ही पर मार रहा है। तुम लोग ही भूल गए थे कि ये पृथ्वी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये हम जैसे जीव जंतुओं और विषाणुओं का भी घर है। परमाणु बम बनाकर तुम लोग अपने को अजय समझने लगे थे, लेकिन हमरे जैसा एक छोटा सा वायरस तुम लोगों की बैंड बजा दिया। और एक बात बताएं, हमरे भगवान भी वो विष्णु जी ही हैं और उहे हमको यहाँ भेजे हैं, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे पालनहार नहीं, वो करोड़ों अरबों जीव जंतुओं के भी पालनहार हैं और उनकी रक्षा करने के लिए ये सब खेल रचे हैं। और अगर तुम लोग सुधर गए तो सब ठीक हो जाएगा, वरना कसम गंगा मैया की एक एक को चुन चुन के मारेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह सुधर जाएंगे। हाँ, नहीं सुधरे तो सिधार जाओगे। जी 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 जी, अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे कोरोना भैया। उम्मीद करते हैं आपको उनका इंटरव्यू पसंद आया होगा। सो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर कोरोना भैया से आपका कोई प्रश्न हो या उनके लिए कोई संदेश हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। थैंक यू। इस लॉकडाउन में मैंने टोटल 11 बातें सीखी हैं। नंबर 1, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क नहीं है। नंबर 2, यूरोप कंट्री वाले उतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितना वो दिखते हैं। नंबर 3, गरीब आदमी जितना बीमारी से लड़ सकता है उतना अमीर नहीं। नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा वायरस इंसान खुद ही है। नंबर 5, कोई पीर, कोई मौलवी, कोई पुजारी, कोई फकीर, कोई पादरी किसी बीमार को शिफा नहीं दे सकते। नंबर 6, अब हम महसूस कर सकते हैं कि परिंदे और जानवर पिंजरे और चिड़ियाघर में कैसा महसूस करते होंगे। नंबर 7, घरों में रहकर भी कारोबार किया जा सकता है। नंबर 8, हम फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 9, हम गाड़ियों के बगैर भी चल सकते हैं। नंबर 10, हमारे पास वक्त बहुत है अगर हम सही इस्तेमाल करें। नंबर 11, आखिरी बात, दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले लेकिन कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकती। I've cried so many tears this morning alone. I had to step outside of work to catch some air. The virus is real. I see it with my own eyes. It's attacking people. It is attacking people
just attacking people. People are fine one day and they gone the next. These people, they can't even see their family. They haven't seen their family in weeks. They dying by themselves. All they got is me. I can only be so strong. I can only comfort them so much. They depressed. They worried. I just see so many families cry. It's taking a toll on me. I can't even get my words together. Y'all, please stay at home. Stay at home. Love on the people that's with you, that you quarantine with. Like, love on them. People are here one day and gone in two. I can't sleep. I'm barely eating. Because you just seeing it destroying lives. When you see something destroy lives in front of you and there's nothing that you can do, you can't turn left, you can't turn right. It's literally in God's hands. Like, when there's nothing that you can do, it take a toll on you. I ain't gonna lie. I feel like quitting. Just going to sit home. But I know if they don't have nobody, they got me. And God didn't put me in this position. He didn't put me at this place and time for me to give up or for me to be weak. But God, I just ask that you heal the land right now, God. Please, God. Whatever's going on, God, I know you can just wipe it away with one word. God, just take it away, man. This is real. It's just something I ain't never seen before in my life. But God is able, and He's able. Some people are gonna turn around. I believe in a turnaround. It's just this is a lot. I got a lot on me. Thank y'all for letting me vent, but I just need y'all to stay at home. Cause y'all don't know what y'all doing to these people who can't handle the virus. Stay at home. Stay clear. Jesus. Thank y'all. I'm sorry. But thank y'all. Meow.